Namaskar, this is CVR English Prime Time and you are watching the World News Special with me, Anukriti Sharma. Now we start with the world of business today. There has been a meltdown on Wall Street. They lost $1 trillion in a day. The worst day in 2 years thanks to the much hyped AI stocks. That's artificial intelligence for you. Investors fear it's a bubble. And this is making the tech giants bleed. We'll tell you what all of this means. Also in the US, Joe Biden has made his first speech after pulling out of the presidential race, and it has triggered conspiracy theories on him looking orange and AI generated. And now it's time for our lead story. Yes, ladies and gentlemen, we are going to look at Wall Street and artificial intelligence back to back, side by side, inside out, outside in. Wall Street is bleeding. There was a mass sell-off on Thursday. Investors lost as much as $1 trillion, 1 trillion in a day. And it may not be over just yet. So what triggered this fall? Artificial intelligence or AI. It is like a ticking time bomb right now. Now let me show you a list. These are big tech companies. They were riding high on the AI wave, but now they are losing money. Nvidia, the biggest seller of AI chips, was down by over 6% yesterday. Broadcom, more than 7% down. Supermicro Computer, more than 9% down. And tech giants who made big bets on AI also saw losses in yesterday's trade. Apple dropped by almost 3%. Microsoft, more than 3%. Meta, the parent company of Facebook, lost 5.6%, and Alphabet, that owns Google, lost 5%. The stocks saw some recovery today, but the Nasdaq has opened in the red again. It was down by over 200 points about a few hours ago, and this is quite a fall because until recently there was a massive demand for these stocks. AI triggered a rally in the tech sector, literally a rally. The big tech was sold out on the promise of AI. They said it's the next big thing, the next big game changer, the trailblazer. It is the future. Google CEO Sundar Pichai has compared the AI breakthrough to inventions like fire and electricity. Microsoft CEO Satya Nadella said, "We are entering a golden age and AI is going to be good for the humanity." Apple CEO Tim Cook is also bullish on artificial intelligence, as is Meta's Mark Zuckerberg. And all these tech titans have repeated such claims over and over again. In fact, I want you to listen to this. Apple CEO Tim Cook says, and I'm quoting him here, "Together, all of this goes beyond artificial intelligence. It's personal intelligence, and it is the next big step for Apple." Big tech went all in on AI and investors bought into their sales pitch. In the last 1 year, they've poured some $9 trillion into the AI space, $9 trillion. But now the investors are pulling out. A large number of them are pulling out at least. They feel there's a bubble and that the hype around AI is overblown. And now tech companies are spending billions of dollars on artificial intelligence. They're buying chips, they're buying data centers, and they're soaking up massive amounts of power just to get their AI services up and running. And the result is this. The expenses of these companies are now soaring. Microsoft has spent $14 billion in 1 quarter in capital expenditure. And this spending was driven by AI. What is capital expenditure? It is the money that a company spends on buying physical assets, stuff like chips, stuff like servers in this case, which are used to develop AI tools. And this money, the money is spent on building this infrastructure. This money is called capital expenditure or CapEx in short. So Microsoft spent $14 billion in just 3 months and they're not done yet. They're expected to divert more and more money into AI related expenses. And the other players don't want to be left behind. They're also trying to match these numbers, if not beat them. Long story short, big money is being thrown at AI and the tech giants have no plans to stop. In fact, one estimate says
that these companies will spend over $1 trillion on AI and other related investments in the coming years, which is quite a significant sum. And it's prompting questions from the investors now. The most pressing question is this: what is the return on investment? Are tech giants making any money? What are they getting in return? And so far, the answer is that they're getting almost nothing back. Here's an assessment from the Barclays. It expects big tech to spend some $60 billion every year on developing AI models. $60 billion every year till 2026. And what will be the return on this investment? Just $20 billion. Now that is a projection, which means a $40 billion loss. Quite a significant sum. It may or may not pay off in the long term, but as of today, it is becoming a less attractive proposition. Take the case of OpenAI, the makers of ChatGPT. Arguably the most popular AI product out there in the market, ChatGPT was launched in November 2022, almost 2 years ago. OpenAI offers 2 versions of ChatGPT. One is completely free to use, and for the other, there is a subscription fee. Now, reports say that ChatGPT has more than 100 million active users across the globe. 100 million active users. So, OpenAI should be minting millions by now. But that's absolutely not the case. OpenAI is in fact bleeding cash. It could lose as much as $5 billion this year, and the company could run out of money in just 12 months, and this sums up the problem with artificial intelligence today. It requires billions of dollars in investment, but the tech giants have not figured out how to make money of it. They don't have a viable business model. And big banks and investors are now calling out the tech giants on this. Consider this quote. It is by Jim Coelho. He is the head of global equity research at Goldman Sachs. Listen to what he has to say about this AI boom, and I'm quoting. AI bulls seem to just trust that use cases will proliferate as the technology evolves. But 18 months after the introduction of generative AI to the world, not one truly transformative, let alone cost-effective application has been found. Now, all these assessments suggest one thing. There is an AI bubble. Don't get me wrong though. There is no doubt that this technology is revolutionary, but we are still miles away from unlocking its true potential. It is going to take some time and a lot of investment to get there. Until then, it is just a promise of AI. The promise remains just like that. It is a promise. There is, indeed, no ETA to artificial intelligence. Now, coming back to our next story, speaking of the American presidential campaign, Joe Biden has broken his silence finally. He quit the presidential race 5 days ago, but after that nothing. No statement, no reaction, not even an appearance. Many far-right Republicans even claimed that the president was dead or in hospital. But on Wednesday, he put those theories to rest. Joe Biden made a speech from the Oval Office and explained his decision to quit the electoral race. The Democrats are going gaga. They're raving about Biden's speech. They say he's protecting democracy. A bit strange though, because it took a debate disaster, a donor rebellion, and a party revolt for Biden to save democracy. Sounds like a reluctant savior to me. Nonetheless, he has done it. But a lot of questions still remain about Biden's future. He still has 6 months left in the office. What would he do with it? Would he be a lame duck president, or would he try to leave a lasting, strong legacy? The president answered that question too. Just listen in. Freedoms and our civil rights, all merited a second term. But nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation. You know, there is a time and a place for long years of experience in public life. There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now.
Over the next 6 months, I'll be focused on doing my job as president. That means I'll continue to lower costs for hardworking families, grow our economy. I'll keep defending our personal freedoms and our civil rights, from the right to vote to the right to choose. I'll keep calling out hate and extremism. Make it clear there is no place in America for political violence or any violence ever, period. I'm going to keep speaking out to protect our kids from gun violence, our planet from climate crisis that is the existential threat. And I will keep fighting for my cancer moonshot so we can end cancer as we know it, because we can do it. And I'm going to call for Supreme Court reform because this is critical to our democracy, Supreme Court reform. You know, I will keep working to ensure America remains strong and secure and the leader of the free world. I'm the first president in this century to report to the American people that the United States is not at war anywhere in the world. We'll keep rallying a coalition of proud nations to stop Putin from taking over Ukraine and doing more damage. We'll keep NATO stronger, and I'll make it more powerful and more united than any time in all of our history. I'll keep doing the same for our allies in the Pacific. You know, when I came to office, the conventional wisdom was that China would inevitably surpass the United States. That's not the case anymore. And I'm going to keep working to end the war in Gaza, bring home all the hostages, and bring peace and security to the Middle East and end this war. We're also working around the clock to bring home all merit a second term. But nothing can come in the way of saving our democracy. That includes personal ambition. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation. You know, there was a time and a place for long years of experience in public life. There's also a time and a place for new voices, fresh voices, yes, younger voices. And that time and place is now. Over the next 6 months, I'll be focused on doing my job as president. That means I'll continue to lower costs for hardworking families, grow our economy. I'll keep defending our personal freedoms and our civil rights, from the right to vote to the right to choose. I'll keep calling out hate and extremism. Make it clear there is no place in America for political violence or any violence ever, period. I'm going to keep speaking out to protect our kids from gun violence, our planet from climate crisis that is the existential threat. And I will keep fighting for my cancer moonshot so we can end cancer as we know it, because we can do it. And I'm going to call for Supreme Court reform because this is critical to our democracy, Supreme Court reform. You know, I will keep working to ensure America remains strong and secure and the leader of the free world. I'm the first president in this century to report to the American people that the United States is not at war anywhere in the world. We'll keep rallying a coalition of... And now let's zoom in on India. It's time for the Union Budget 2024 latest updates. We have the latest for you. In India, the opposition MPs protest over the budget inside and outside the parliament. They're unhappy with the union budget which was presented few days ago. The MPs claim that the budget discriminates against the opposition ruled states. The budget has earmarked significant projects for Bihar and Andhra Pradesh. These are the states whose leaders are a part of the ruling coalition. The Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju slammed the opposition today yet again, saying that this is monsoon as well as the budget season. The budget has already been presented and now it's time for a healthy discussion. He emphasized that everybody wants to have a healthy discussion, but some opposition leaders have been disrespecting the honor of the parliament. He seconded Prime Minister Modi's stand on everyone working together in a spirit of collaboration and cooperation for the nation. However, Rijiju expressed utter disappointment at
all these opposition leaders abusing the Prime Minister. He was seen condemning such behavior, and he is right. At the time of discussing the budget in a healthy manner, most of the opposition leaders are only indulging in revenge and accusatory politics. Over the last few days, leaders of the opposition have been shooting unverified claims and accusatory remarks at the ruling party instead of heading towards a healthy discussion of any loopholes in the budget whatsoever. Take a look at what he had to say. एक शानदार जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। अगर सही समय में विपक्ष के लोगों का समझ में नहीं आया तो जनता पनिशमेंट देंगे उसको। सरकार चलाने के लिए मोदी जी को तीसरे टर्म भारत के लोगों ने दिया है। हम अपने आप सत्ता में नहीं आया। मोदी जी को तीसरे टर्म प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह जनादेश भारत के जनता का है। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है या गाली गलौज देने के लिए बजट सेशन नहीं होते हैं। ये मानसून सत्र है और एक तरीके से ये बजट सत्र ही है। तो इस मानसून सेशन में जो बजट पेश किया गया, कल बजट का पहला दिन था चर्चा का और कल की चर्चा में आप सब ने देखा होगा एक शानदार बजट मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। कल अपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूं कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि दल के लिए जो कुछ करना था चुनाव में किया है, अब देश के लिए सबको मिलकर काम करना है। दल के लिए नहीं, देश के लिए अगले 5 साल देश के लिए सबको करना है, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया। कल विपक्ष के लोग ने बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ राजनीति की है। 2 चीजें विपक्ष के लोगों ने किया है कल। पहला तो देश का जनादेश, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कल आप देखेंगे अच्छा से, आप पूरे वीडियो को भी आप फिर से देख लीजिए। एनडीए के जितने लोगों ने कल बजट चर्चा में भाग ली, सबने बजट के बारे में अच्छी तरह से जिक्र किया और सुझाव दिया और अपना अपना राज्य में जो फायदा है उसको भी गिनती किया। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना, ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते फिर से अपील करता हूं, जनता का जनादेश को अपमान किया है और प्रधानमंत्री जी को। Yes, we all know the budget is out. The leaders of the BJP are busy lauding it. The opposition leaders are busy slamming it. Speaking of the ongoing drama politics in the parliament these days over the budget, why the latest uproar in the Lok Sabha prompted Defence Minister Rajnath Singh to leave his seat? Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee. We will look at him as well. But for now, let's take a look at these visuals from the Lok Sabha. अरे महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा ताकद आहे,
त्या महाराष्ट्राची शान मिस्टर सुनील तटकरे जी, खाली घालवली. सुनील तटकरे जी, तुम्ही ऐकत राहते. सुनील तटकरे जी, मला ऐकायला त्यावेळेला शरम वाटेल. अशा पैसा तुम्ही महाराष्ट्रात. श्री सुनील जी, श्री सुनील जी, 40 कोटी जनतेने या देशाच्या जनतेने आप उधर मत देखिए, आप चेयर को एड्रेस करिए. संसदीय लोकशाही प्रणाली व्यवस्था डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिली. 52 सालामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू देशाचे पंतप्रधान झाले. 57 मध्ये झाले, 62 मध्ये झाले. कल्याण जी, अध्यक्ष महोदय, कल्याण जी बैठ जाए. Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee sparked a commotion in the Lok Sabha by asserting that members cannot address the parliament from anywhere except their designated seats. That's what he said. Now his statement led to a persistent uproar across the parliament, across the board, forcing the proceedings to be adjourned. Meanwhile, Rajnath Singh also rose from his seat, joining this entire fray. Take a look at this dramatic sight. Me an opportunity to start a debate on the general budget on the behalf of Treasury bench. I have no words to express gratitude for the Indian leaders. I am the only one from the NCP, but I have been given an opportunity to start the debate. आपका चेयर ये है, तुम्हारा चेयर ये है. Sir, I have been taken and placed. Bear with me, all my. अभी सीट का आवंटन नहीं हुआ है, प्लीज. नो वो सीट भी, एक मिनट प्लीज बैठिए. वो सीट भी एनडीए की है और मंत्रीगण की सीट है. चलिए बोलिए आप. आपकी भी सीट नहीं है, अभी सीट आवंटन नहीं हुआ है. चलो बोलिए. So I have no words to express my gratitude towards most towering leader Narendra Ji Modi. Whole India is headed by him. बैठिए प्लीज. But I would like to express my feelings. माननीय, I have been taken place. माननीय, I will talk in my Marathi language till the Marathi language has been given classical language status. So I have no words to express my gratitude towards most towering leader नरेंद्र जी मोदी. तुम्हाला काय वाटते मी बोलतो महाराष्ट्रात, तुम्ही काळजी करू नका. अरे महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा ताकद आहे. त्या महाराष्ट्राची शान मिस्टर सुनील तटकरे जी, किती खाली घालवली. श्री सुनील तटकरे जी, तुम्ही ऐकत राहते. सुनील तटकरे जी, मला ऐकायला त्यावेळेला शरम वाटेल. अशा पैसा तुम्ही महाराष्ट्रात. श्री सुनील जी, श्री सुनील जी, 40 कोटी जनतेने या देशाच्या जनतेने. आप उधर मत देखिए, आप चेयर को एड्रेस करिए. संसदीय लोकशाही प्रणाली व्यवस्था डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिली. 52 सालामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू देशाचे पंतप्रधान झाले. 57 मध्ये झाले, 62 मध्ये झाले. कल्याण जी, अध्यक्ष महोदय, कल्याण जी बैठ जाए. क्या बोले मैं? Nothing will go on record. Nothing will go on record. कल्याण बनर्जी जी, मिस्टर कल्याण बनर्जी जी, इवारे सीनियर मिस्टर कल्याण बनर्जी जी. माननीय रक्षा मंत्री जी, आप बैठ जाएं. माननीय रक्षा मंत्री जी बैठ जाएं. आप सब बैठ जाएं, कृपया आप सब बैठ जाएं. कल्याण बनर्जी जी, सदन में जानबूझ करके आप इस तरह का व्यवधान मत करिए. माननीय सदस्य सुनील तटकरे. Me an opportunity to start a debate on the general budget on the behalf of Treasury bench. I have no words to express.
I'm sure you saw that dramatic scene in the parliament. So much of heat, so much of drama. Where is all this coming from? Why are we not having a healthy discussion about the Union Budget 2024 to discuss and discover the loopholes that might exist so that we can all work together in a spirit of cooperation and collaboration to make this Union Budget even more effective and proactive for the entire country so that the country can progress together as one towards greater growth through education, upskilling and empowerment and enabling each other. So many unverified claims being thrown at each other, so many accusations, false allegations being made at each other. The opposition parties, the rulers of the opposition parties throwing accusatory remarks, absolutely unverified claims at the rulers, at the ruling party, at the leaders of the ruling party. Where is so much hate coming from? Where is all this drama coming from? And the worst is yet to come. The heat is only going to get higher from here. The drama is only getting worse and worse with each coming day. We need to get some sanity into this parliamentary ecosystem and start having more healthy discussions with this union budget so that the ruling party and the opposing parties can work together. The opposition's job is to figure out loopholes in the budget, and the ruling party's job is to have a healthy discussion with the opposing parties and work in collaboration towards making this union budget more bulletproof, shockproof and robust for the entire country in the long term. And now let's talk about the Kargil Divas. Yesterday, Defence Minister Rajnath Singh paid a tribute to the heroes of the Kargil War at the National War Memorial in Delhi on the occasion of the Kargil Divas. CVR English News has the latest visuals for you from the site.
Meanwhile, it goes without saying that Honorable Prime Minister Narendra Modi also reached Dras in Kargil today to pay tribute to the war heroes on 25th anniversary of the Kargil Vijay Divas. Prime Minister Modi paid tribute to the brave hearts of the Kargil War at Kargil War Memorial in Ladakh's Dras. He also laid a wreath at Kargil War Memorial, saluting the valor of the Jawans who make the supreme sacrifice in the Kargil War. Let's take a look at these grand visuals. और ये तस्वीरें कारगिल युद्ध स्मारक की और ये तस्वीरें कारगिल युद्ध स्मारक द्रास से During this occasion, Modi ji slammed Pakistan for sympathizing with the terrorists. During his public address, he stated that Pakistan had failed in all its nefarious attempts in the past. Despite that, Pakistan had not learned anything from its history. It was trying to keep itself relevant with the help of terrorism and proxy war. Modi ji boldly spoke out from a place where the masters of terror could hear his voice directly. He called them Atank ke Aka. He mentioned in his address that those
patrons of terrorism would never succeed in their nefarious intentions, and that India's soldiers would crush terrorism with full force and the enemy would be given a befitting reply. Let's take a look at Modi ji's speech. अपने इतिहास साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत, साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध Today, Prime Minister Narendra Modi virtually carried out the first blast of the Shinkunla Tunnel project. Yes, the Shinkunla Tunnel project, which will be the highest tunnel in the world once it gets completed.
Now it consists of a 4.1 kilometer long twin tube tunnel constructed at an altitude of around 15,800 feet on the Nimmu-Parun-Darcha road. The Shinkunla tunnel will not only ensure the swift movement of our armed forces and equipment, but it will also foster economic development in Ladakh. Truly a moment that creates history that we'd be proud of as Indians. Let's take a look at these stunning visuals. India is celebrating Kargil Vijay Divas today, and in this episode, we are going to take you through the Kargil Divas. At 6 a.m. on the 13th of June, Govindra Nath Brigade Command arrived in Pakoda very soon. But those who died were not जब करगिल युद्ध शुरू हुआ था उस टाइम पर ये फोर्समेंट मांगी जाती है, कहीं जैसे सिस्टर बटालियन होती है हमारी उस टाइम पर .4812 पर जब दुश्मन ने कब्जा जमाया था उस टाइम पर हमारी बटालियन ने जो टास्क दिया था, जो इंडियन आर्मी की तरफ से जो जहां पर जिस साइड से भी टास्क मिला था उस टास्क को पूरा करके हमने अपना जो जमीन थी हमारी, हमने दुश्मन को मार गिरा करके अपनी जमीन हासिल कर दी। तो कितना प्राउड फील है आपको कि 99 वार में आपके रेनफोर्समेंट आपकी साथ? उनको पता चला कि ये हम अगर किसी के special Silver Jubilee Festival was organized by 1 JK Battalion NCC in Srinagar. Actually, today's day reminds us of the bravery and the sacrifice of our Indian soldiers.
During this, the brave soldiers of the country celebrated Kargil Vijay Divas along with the NCC cadets in Srinagar. Tribute was paid to the brave soldiers who sacrificed their lives during the Indo-Pakistani War in 1999, and India's victory was celebrated. In this war, India freed all the peaks of Kargil from the occupation of Pakistan and hoisted the tricolour. Today, the country is celebrating by remembering that day. This important program was organized in the memory of the bravery and the sacrifice of the Indian Armed Forces. And also this celebration will increase the feeling of patriotism and national pride among the youth. से जाते दिल्ली नहीं जाना था, वो लड़ाई का माहौल रातों रात बनने के बाद और सुबह 4 बजे हमने बटालक सेक्टर के बीच में पहुंच गए और वहां से हमें अम्निशन हथियार पूरा सब खाने पीने के शक्करवारे मिलकर उसके बाद बटालक से हमने सीधा दानाले से आगे अपने अपने लोकेशन को संभाला उन पहाड़ियों पे चढ़ते हुए, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत हाइट पे बैठा था, लेकिन हमारी जो यूनिट थी रेजिमेंट 12 जकलाई थी, वो जो है नीचे से ऊपर चढ़ना था और एक पहाड़ी पे नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए और ऊपर बंदा बैठा हुआ है, वो पत्थर भी फेंक रहा है, पत्थर से भी कई कैजुअलिटी होती है, लेकिन सब सामना करते हुए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमने अपने एम को हासिल किया। उसके बावजूद भी पूरा पाकिस्तान की फौज ने क्लियर बता के कि हमारी फौज नहीं है, ये पता नहीं कौन है, लेकिन हमारी यूनिट ने जिंदा बंदा नायक अली को पकड़ने के बाद प्रूफ करके दिखाया और हेलीकॉप्टर में डाल के और दिल्ली तक पहुंचाया और पाकिस्तान को प्रूफ करके दिया क्या ये आपकी आर्मी नहीं है, और उसका वो उस समय रिटायर जाने वाला था, उसका पेंशन बुक आई कार्ड के साथ प्रूफ करके दिखाया। उसके बावजूद हमने .4812 और .5203 पे कब्जा करके फ्लैग लगाया, जिसमें हमारे कैप्टन अमोल कालिया साहब, सूबेदार बादर साहब और कैप्टन केसी नोगराम साहब, जिसके नाम पे सलमा जैकले सेंटर में है। और इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने पूरा एम अपना पोस्ट संभालने के बावजूद उसके बाद फ्लैग लगाने के बाद फिर हमने थोड़ा सांस लिया। तब तक हम रात दिन एक करके 1 वीक, जो पहला वीक था उसमें कुछ खाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था। उसके बाद खाने के लिए ट्रकों के ट्रक आए हमारे पास, पंजाब ने, राजस्थान ने, हरियाणा ने, मिठाई, चने, बहुत कुछ आइटम, क्लोथिंग की कोई कमी नहीं रही। लेकिन तब तक पहला हफ्ता हमारे पास जो लगा था, जो था वही था। तो ये बताएं, उन्हीं शहीदों की याद में यहाँ पे एक छोटी सी फंक्शन रखी और कितना गर्व करते हैं अपने आप को? मुझे जब आज 10 दिन पहले ये इन्फॉर्म किया गया कि आपको एसपी कॉलेज में वहाँ पर प्रोग्राम है करगिल के, मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे इस डे पे 26 जुलाई पे तो हम हर उस शहीद को सलूट करते हैं जिन्होंने अपना आपको बलिदान किया देश के लिए और देश के लिए अपनी जान कुर्बान किया। और हम भी ये चाहते हैं, जो 6 बचे थे, अगर उस 6 में मैं भी शहीद हो जाता देश के लिए, मैं गर्व करता हूं अपने आप के, मुझे अगर देश के लिए अभी भी मौका मिलेगा किसी भी जगह कोई ऑपरेशन के लिए, मेरी पूरी सर्विस पूरी फील्ड की है। अनंतनाग एरिया में 3 साल 93 से 96 हालात कैसे थे वो आपको पता है। नागालैंड एरिया, आसाम, अरुणाचल और पंजाब मिलिटेंसी एरिया, हर जगह के मेरे ऑपरेशन, पूरा फील्ड की सर्विस। सोल्जर्स जो है वो शहीद हुए, 1363 वुंडेड हुए, और उनकी जो बलिदान है वो वेस्ट ना जाए, हमारी यंग जनरेशन सीखे। एसपी कॉलेज ने हमको आज यहाँ पर अपना ऑडिटोरियम देकर हमने ये प्रोग्राम आयोजन किया है। इसके अंदर हमने वॉर वेटरन्स, मेरे राइट साइड पे है सूबेदार अजीज साहब 12 जैकलाई के, जो कारगिल युद्ध में शामिल थे, और हवलदार मंजूर
जो 10 जैकलाई के हैं, लेकिन लड़ाई उन्होंने भी 12 जैकलाई के साथ लड़ी। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बच्चों को बताए। मेरा मकसद ये था कि ये इंटरेक्शन करें। साथ ही में वीर नारी भी आई हैं यहाँ पे आज प्रोग्राम में, और हम इसी प्रोग्राम के माध्यम से अलग अलग विभिन्न किस्म के कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन किया विद द थीम ऑफ कारगिल। Look at that level of patriotism. It's truly inspirational and aspirational, and can only be achieved in a country such as India, where Indians collaborate and cooperate as one. On the 25th anniversary of the Kargil Vijay Divas, Prime Minister Narendra Modi said, and I quote, "The truth is that the Agnipath scheme will increase the strength of the country, and the capable youth of the country will also come forward to serve the motherland." Retired officers of the Indian Army have reacted to this statement. Let's take a look. जयंती का मौका और ये कर्म, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मैसेज है वो पाकिस्तान आर्मी के लिए खासकर उनको मिल गया होगा। जो ये फैसला लिया गया है अग्निवीर के बारे में, आर्मी के सब लोगों से कंसल्ट करके ही लिया गया है। आपने अचार डाला है तो 4 महीने वेट नहीं करेंगे तो ऐसे खाएंगे तो बोले कच्चा यार स्वाद नहीं आ रहा है। देखिए, ये मौका, ये जगह और रजत जयंती का मौका और ये कर्म भूमि, तो यहाँ से जो आवाज जाएगी तो उसमें बड़ी ताकत होती है, और वो भी प्रधानमंत्री की तरफ से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मैसेज है वो पाकिस्तान आर्मी के लिए खासकर उनको मिल गया होगा, क्योंकि हम शांति चाहते हैं लेकिन आतंकवाद नहीं चाहते, और उसको खत्म करना हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है, और करेंगे। मोदी साहब ने जो एक संदेश दिए कि जो हमारे नौजुवक हैं 20 से 30 इयर्स के जवान, वो जो कारगिल वार में उन्होंने देखा है कि जो अफसर साहबान, जशु साहबान और जवान जो 20 से 30 इयर्स के बीच में थे, एडल्ट, उन्होंने जो जोश, जुनून, लीडरशिप, जिस तरह की कार्रवाई किए हैं बॉर्डर के ऊपर, वो एक मिसाल है, और आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। नहीं, अग्निवीर एक एडल्ट लोगों के लिए जो बाकी देशों में है उस तरह से हमारे देश में भी हो तो अच्छा ही होगा। So Prime Minister clarified it very well. I don't think I would have anything else to say to it. It doesn't require an explanation because the PM said that it's a decision taken by the armed forces. Now I retired 12 years back, and all this has happened post my retirement, and I believe in a very firm principle that I did my bit when I was serving. Now is a chance for our youth who are taking over those reins from us to serve the country the day we did, and we have to have confidence in them. And I believe the younger generations always outwit the older ones. They do better. But the opposition always sees that. See, the proof of the pudding lies in its eating. ये सब conjectures हैं। ये प्रोग्राम को फ्रैक्टिफाई करने दीजिए, लोगों को सर्विस में जाने दीजिए। जब वो रिटायर होंगे, जैसे ही उनको चैलेंजेस मिलेंगे, कोई कहता है उसकी शादी नहीं होगी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये सब मेरे दिमाग से पूछेंगे तो प्रीमेच्योर मनगढ़ंत बातें हैं। आपने अचार डाला है तो 4 महीने वेट नहीं करेंगे तो ऐसे खाएंगे तो बोले कच्चा यार स्वाद नहीं आ रहा है। लेकिन when it is time ripened it, let the fruit ripen, you will love it. So give the scheme a chance. And like the Prime Minister said, it's a decision by the armed forces. The politicians have endorsed it. The government of the day has endorsed it, and the country is accepting it. So, like I said, I don't think there's much for me to explain on that. प्रधानमंत्री की मैं बहुत इज्जत करता हूं। जो ये फैसला लिया गया है अग्निवीर के बारे में, आर्मी के सब लोगों से कंसल्ट करके ही लिया गया है। और आपको मैं ये बता दूं कि मैंने 71 वॉर में भी हिस्सा लिया है और 99 वॉर में भी। तो 71 वॉर में उससे पहले भी हमारे सोल्जर्स जो थे उनका 7 साल का टेन्योर होता था और 8 साल का उनका कलर सर्विस होता था। 8 साल का कलर सर्विस होता, 7 साल रिजर्व का होता था। तो 8 साल के बाद वो रिटायर हो जाते थे और 7 साल उनकी जो रिजर्व सर्विस थी उसमें उनको बुला सकते थे। 71 वॉर में हमने बहुत रिजर्विस्ट बुलाए थे, तो वो उन्होंने हमारी काफी मदद करी थी। तो अग्निवीर को उस निगाह से भी देखा जाए तो गलत नहीं है। अभी नई स्कीम है, इसको रिव्यू किया जा सकता है, ट्रायल बेसिस पर है।
किस तरीके से आगे इसका क्या एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस है, वो अभी समय बताएगा देखने में। तो आर्मी से फीडबैक लेंगे और फिर उसको आगे कैसे करना है। पेंशन वगैरह की लोड पड़ रहा है, ये वो पॉलिटिकल बातें हैं। मैं इसके बारे में ना तो कुछ जानता हूं ना कुछ कहूंगा, क्योंकि मैं कच्चा कमेंट नहीं देना चाहता। The Southern Naval Command commemorates Kargil Vijay Divas. The important program was organized in memory of the bravery and the sacrifice of the Indian Armed Forces. And it's all for this episode of Primetime World News Special. This is Anukriti Sharma signing off. Keep watching CVR English.